पर मुनीश उम्मीद नहीं करते हैं, चौंका दिया है बैट्समैन को. And that was an accurate bouncer by Mitchell Starc. Getting ready to bowl the second ball now. अगली गेंद मिशेल स्टार्क की और इस बार लगभग नटराज अंदाज में खेला है, ऑन साइड में मोड़ दिया है उस गेंद को, एक पैर हवा में झूलता हुआ, कलाइयां घूमती हुई स्क्वायर लेग अंपायर के पास से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन. Well, you spoke about Natraj. The only batsman I can think of is the great Kapil Dev, the way he was hitting the Natraj-shaped shot in England. And he was there in the Legends Gallery yesterday. But what a start by Rohit Sharma. What eyeball coordination he has. And just using the pace of Mitchell Starc's delivery. Right behind the line of the ball. Oh, you want to watch that replay again and again. बहुत अच्छा तालमेल हाथ और पैरों के बीच में संबंध में, दृष्टि बहुत पैनी रखते हुए इस बार गेंद की रफ्तार कुछ कम मिडिल स्टंप की तरफ आती हुई. स्टार्क के बारे में कहना होगा कि जानबूझकर उन्होंने अपने आप को लिमिटेड ओवर से अलग रखा है, क्योंकि वो मुख्य बॉलर बनना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैचेस में, और इसीलिए उनके ऊपर ज्यादा दबाव अच्छा प्रदर्शन के लिए भी बन जाता है, और उनके लिए ये लाजमी है कि उनको सफलता मिले जिससे उनका क्रिकेट करियर आगे बढ़ सके. आईपीएल से भी परहेज करते रहे और अपना सारा दारोमदार टेस्ट क्रिकेट में, और स्मरण रहे कि ऑस्ट्रेलिया को इस मैच के बाद एशेस भी इंग्लैंड में खेलनी है. एजबास्टन में टेस्ट मैच होगा और लंबी श्रृंखला होगी. मिचेल स्टार्क धीरे धीरे दौड़ते हुए, और ये गेंद जो कि बहुत ज्यादा कोण नहीं बना रही थी, बाएं हाथ से ओवर द विकेट कर रहे हैं, एक स्वाभाविक एंगल बनता ही है, लेकिन कुछ पलटकर सीधी हो रही थी सीम के सहारे, सुरक्षित खेल दिया उसको. Good to see that left arm in swing coming straight to the right hander. Rohit Sharma aware of the heroics of Mitchell Starc, so he comes forward, watches the ball, and that's a great sight. So the great battle between the new ball and the opening batsman has begun. The Australian bowlers will attack full throttle. Rohit Sharma, of course, what a test career he's had. His average is 45.72 and 50 matches for him and over 3,300 runs in his test match career. Mitchell Starc ready to bowl the next delivery. अगली गेंद मिडल और लेग स्टंप पर थी, इस बार उसको डिफ्लेक्ट कर दिया, पीछे की ओर खेला शर्मा ने, और रोहित शर्मा को 1 रन और मिलेगा 5 बगैर नुकसान के. और स्टार्क अपने रनअप से कोई बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ नहीं रहे हैं, पलटकर देख रहे हैं क्रीज का वो हिस्सा जहां उनके पैर पड़ रहे हैं. एक तो वार्नर जब बैटिंग करते हैं तो 2 जगह लगभग छेद बना देते हैं घिस घिस के अपने जूतों से, ये देखने के लिए कि उनका बायां और दायां पैर किन 2 क्षेत्रों के बीच में से जा रहा है. लगभग हल्का सा गड्ढा सा बन जाता है. जिस तरह से बॉलर्स के रनअप को मेकअप किया जाता है, ठीक किया जा सकता है, वार्नर के उन फुटमार्क्स को भी करना पड़ता है. और वहीं से कहीं से कुछ परेशानी है, क्रीज से बाहर निकलकर खड़े होकर पैरेलल टू द क्रीज, गिल तैयार पहली गेंद का शफल करते हुए ऑफ स्टंप की सीध में आते हुए. शफल थोड़ा सा बन सकता है क्योंकि एक एंगल डिलीवरी थी, फिर बैट को गेंद की लाइन से अलग किया और छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए. You know, the right word for Shubman Gill for me is the monk. He's a cricketing monk. He's thinking, eating, drinking cricket throughout. And what concentration, what elegance he has in his game. And you need to devote your 24 hours to this game, and that's exactly what Shubman Gill is doing. And the way he left this ball speaks about the confidence he's carrying with him. और विशेष करके जिस तरह से एक बेहतरीन कैच उन्होंने पकड़ा था कैमरॉन ग्रीन का, उससे भी मनोबल 7वें आसमान पे होगा. दूसरे स्लिप पे वो पकड़ा था, आसान कैच नहीं था, ऊंचा था और इतनी तेज खेला गया था उस स्ट्रोक को. सेकंड स्लिप पे वैसे भी ज्यादा ताकत के साथ शॉट्स आते हैं पहली स्लिप की तुलना में. पीछे गिर गए थे, लेकिन उंगलियों को ऊपर रख के आमतौर पे कोई भारतीय इस तरह से कैच पकड़ता नहीं है. बढ़िया कैच पकड़ा था, तो फॉर्म में भी है आईपीएल में, और उसके बाद टेस्ट मैच खेलने का मौका, कितना गर्व महसूस होता होगा. भारत के लिए टेस्ट मैच खेलना एक मामूली बात नहीं है. And just to point out one more thing, for all the critics who've been criticizing the Indian bowlers for not getting that bounce in the wicket, I'll tell you what, the previous delivery that Mitchell Starc bowled was actually below the knee length of the wicketkeeper. That's how the carry was. But then Pat Cummins is all set to bowl the fresh over, his first over of this Test Match Championships final, and bowls a leg cutter outside the off stump, and very watchfully Rohit Sharma lets it go to the wicketkeeper. So Pat Cummins, of course, sharing the new ball with Mitchell Starc. The names, of course, create a terror in the opponent camp, but I would say that these are the aging bowlers, Cummins and Mitchell Starc. Do they have that kind of a firepower which they had a few years back? That is a bigger question. But the experience that they carry, the line that they're going to bowl,
that will be immaculate. Bowling with 3 slips and a gully. The point, mid-off, mid-on. Pat Cummins with a forward short leg for Rohit Sharma. Comes in right arm over the wicket. Bowls the delivery on the off and middle. Sharma just times the ball, and look who's there at the forward short leg. It's Alex Carey. And in fact, Travis Head, beg your pardon, Travis Head, and the way he stopped the ball speaks about the eye-ball coordination as well. It's not easy to stop such balls at forward short leg, but then what a stop it has been. He's wearing those, the strong, broad moustache, and that resembles David Boone. He used to field at the same place, but then 5 on the board for India. Sharma batting on 5. Faces now Pat Cummins, right arm over the wicket, short of a length. The ball rose a bit. Rohit Sharma lets it go to the wicketkeeper. It was, of course, high towards his thigh, and then he let it go to the wicketkeeper, and by the time the ball landed in the gloves of the wicketkeeper, it again dipped down. और ये एक फर्क साफ नजर आ रहा है. इस तरह से शॉर्ट लेग का फील्डर भारत ने पूरी इनिंग्स में बहुत कम ही लिया. एक आधी मर्तबा ऐसा लगा, जबकि लेना बहुत जरूरी था, और पहले दिन कुछ ज्यादा अतिरिक्त बाउंस भी नजर आ रहा था. तो इस तरह से शॉर्ट लेग का फील्डर जो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे लगाया है, भारतीय बैटिंग के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने सही रणनीति है. मोनीश, Pat Cummins now wearing the number 30 jersey comes in and bowls again a disciplined line outside the off stump, and very watchfully left by Rohit Sharma. But if you are a batter, you're standing at the non-strikers end, you would definitely say to Rohit Sharma, well left captain. But Cummins had some words to say, and then hands on the head, and he reckons it was very close to the off stump. I tell you what, the batsmen, the modern day batsmen and the thinkers of the game know exactly where their off stump is. And Rohit Sharma was well aware of that as well. 4 deliveries gone of this over from Pat Cummins as he now charges in to bowl the next delivery. Rohit Sharma very watchfully. Looks cool, looks calm. No tensions on the face, no pressure on the face. Cummins comes in and makes him play. He's hooked that ball towards the deep square leg area, but that'll be cut off by Mitchell Starc, beg your pardon. And a clap by Pat Cummins. And what looked like to be a boundary. Ball just landed on the ground and the pace took off. Mitchell Starc very well placed by the captain Pat Cummins. They've got a ploy already against the Indian batters. और एक फील्डर था मौजूद बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द, और गेंद अगर आप देखें तो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच के क्षेत्र में खेला था, और जो फील्डर था वो लॉन्ग लेग के और दाईं तरफ था, लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बीच में था. रास्ता तय करना था, खतरे से खाली नहीं था स्ट्रोक. इस बार फ्रंट फुट पर खेला है, क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है. पेटेंट ट्रेडमार्क स्ट्रोक कहा जा सकता है. ലണ്ടൻ കെനിങ്ടൺ ഓവലിൽ வெர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா இடையிலான இறுதி ஆட்டத்தின் நேர்முக வர்ணனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். அடுத்து தொடர்வது செய்திச் சுருக்கம். அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் தற்போதைய நிலவரத்தை தமிழில் கேட்கலாம். வணக்கம். ஆல் இண்டியா ரேடியோ சென்னை செய்திச் சுருக்கம். कितना समय था उस स्ट्रोक को खेलने के लिए. कमिंस चले, उनकी अगली गेंद शफल करते हुए थोड़ा सा ऑफ स्टंप की स्थिति में आते हुए स्टीयर के अंदाज में खेल दिया, गली और 30 स्लिप के फील्डर के बीच में से गेंद को उठाकर लाएंगे. तब तक दूसरे रन के बारे में सोच रहे हैं. फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं. आप स्लिप में इनकी पोजीशनिंग देखेंगे, इन फील्डर्स की देखिए, बराबर काफी जगह घेर लेते हैं, तो स्लिप कॉर्डर में काफी दूर दूर तक क्षेत्र रक्षक मौजूद हो जाते हैं. लेकिन अच्छी शुरुआत भारत की ओर से, और ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी पूरी कोशिश जारी है एक जल्दी विकेट झटकने की. Well then, what a over for India. And here they are. Rohit Sharma batting on 6 with a boundary. Shubman Gill batting on 6 with a boundary. 13 on the board for India after 2 overs. But the way they've come out and batted, the way they're watching the ball, I know it's too early. I know it's pretty early. Just 12 deliveries. In fact, 13 along with that no ball that the Indian openers have faced. But they've come out with a lot of thinking. And they're watching the ball, the way they're looking at the ball, the way they've left the ball is tremendous. Shubman Gill, of course, with a splendid boundary, a cover drive of Pat Cummins, and I'm sure the captain of the Australian side must be thinking hard now. 13 on the board for India as Mitchell Starc starts a fresh over. पहली गेंद और इसको उठाकर खेला है, गेंद हवा में है, उधर बाउंड्री की तरफ जा रही है, फील्डर थोड़ा सा दूर. ऐसा लगा कि अंतिम समय में रोहित ने अपने स्ट्रोक को चेक किया था वहां पर, और वो खुद उस ओर देख रहे थे कि जहां वो गेंद जा रही थी. गेंद हवा में थी, स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेला था, फील्डर थोड़ा पीछे था.
वहां था नहीं तो मुश्किल में हो सकता था। कुछ बात में कतराए थे, शायद रिफ्लेक्स में खेल गए थे उस स्ट्रोक को ज्यादा। I just want to make a comparison as, the Australians come and they bowl a short delivery. The first short delivery bowled by the Indian team in the first innings with the first new ball was after the 10th over. And we've already seen the short bowling coming in, but the video umpire is having a close look there because Scott Boland, I think there was millimeters away from the rope, and he is questioning that clean take by Scott Boland, whether it was a clean take or no. Otherwise, 4 runs will be awarded to Rohit, but then just a couple added to his total. अगली गेंद और फिर ओवर द विकेट स्टार्क बॉलिंग करते हुए कैरी का अच्छा गैदर विकेट के पीछे की ओर। तो योजना स्पष्ट झलक रही है कि खिलाड़ी को लेग साइड में बाउंड्री पर रखकर विकेट के पीछे की ओर और बीच बीच में शॉर्ट गेंद बाउंसर करें, लेकिन खुलकर कर रहे हैं। मुझे याद आता है वो जो दौरा इंग्लैंड का सफल दौरा भारत ने किया था और दांत खट्टे किए थे इंग्लैंड के बॉलर्स के, तो 1-2 मरतबा इस तरह से हुक करके और पुल करते हुए भी जो करना पसंद करते हैं, कैच आउट हुए थे बाउंड्री लाइन पर। तो शुरुआती क्षण है पारी के, लेकिन उसमें भी शॉर्ट बाउंसर करके और लेग ट्रैप में बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात करके आउट करने का प्रयास है, लेकिन अब तक विश्वास के साथ बैट घूमता रहा है और गेंद ऊंची जरूर गई है ऑफ स्टंप के बाहर बीट करते हुए। कोई बहुत ज्यादा कोण नहीं बना रही है गेंद, और इसलिए परेशानी बैट्समैन की ज्यादा नजर आ रही है। एक ऐसा कोण हो जो कि ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर से निकल जाए तो वो गेंद जाया हो जाती है, लेकिन इतने करीब से निकाल रहे हैं इस एंगल डिलीवरी को भी, और वो उनकी स्टॉक बॉल ही है, ऐसा नहीं है कि पलट के अंदर की तरफ आ रही है, कि स्टंप्स के इतने करीब है कि बहुत विश्वास के साथ छोड़ा नहीं जा सकता। And that was one delivery that swung in and then pitched and went straight to the wicketkeeper. But that was the first instance where we saw Rohit Sharma getting beaten by Mitchell Starc. रहाणे ने कैच पकड़ा उनको जब तेजी से विकेट गिर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के 83वां टेस्ट में 100वां कैच था उनका। इस बीच इस गेंद को स्लिप कॉर्डर में से निकाल दिया है, 2 खिलाड़ी उसके पीछे भाग रहे हैं, नहीं रोक सकेंगे, 4 रन। Well, that was Cameron Green running from the gully area way down to the third man boundary, but this delivery was much wider of the off stump, and Rohit Sharma gave a full blade of the bat and placed it between the gully and the point fielder and getting another boundary. So that's the second boundary for Rohit Sharma in this game. 19 on the board for India. सीम पोजीशन बिल्कुल चेंज कर दी थी और बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, बैट को लगभग जमीन से टच कर दिया था उसको स्ट्रोक को खेलते समय, और गली और जो बैकवर्ड पॉइंट जिसमें लगभग 12 मीटर का फासला नजर आ रहा था, उसके बीच में से प्लेस करके सोच समझ के जानबूझकर खेला गया स्ट्रोक। भारत 19, रोहित शर्मा 12-14 गेंदों पर, और इस बार सामने की ओर खेला है रोहित ने इस स्ट्रोक को। 2 खिलाड़ियों के बीच में कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से फिसलते हुए फील्डर ने उस गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रन को पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं, आसानी के साथ पूरा कर लिया। अच्छा ओवर भारत के लिए, अब तक 8 रन बन चुके हैं इस ओवर में। What similarities? I just want to draw some similarities between the Australian and the Indian side. Of course, both the teams landing almost 1 week before the start of the play. Couple of players from Australia playing in the county, couple of players from the Indian side, they're playing the county cricket. They come in. Is 1 week enough for the cricketers to get acclimatized to the English cricketing culture? I doubt about that, but look how India have gone off to a good start. 21 on the board. Mitchell Starc coming in. तेंदुलकर 115, लेकिन सबसे ऊपर चोटी पे है द्रविड़ 209 कैच पकड़ के, और ज्यादातर स्लिप कॉर्डर में। नए ओवर की पहली गेंद, कमिंस की इस ओवर पिच गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़कर ऑन साइड में
प्लेस करना चाहते थे। स्ट्रोक के पीछे कोई ज्यादा ताकत उड़ेल नहीं सके, डाल नहीं सके। मिडॉन के फील्डर ने उसको उठा लिया और ख्वाजा स्लिप में से कुछ हिदायत देना चाहते हैं बॉलर को और कुछ फील्ड प्लेसमेंट की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अपने कप्तान और बॉलर का। भारत 22, शर्मा और गिल पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। ऑस्ट्रेलिया 469 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। लंच के बाद लगभग 1 घंटे के खेल के बाद ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम। हैवी रोलर का इस्तेमाल किया भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने और दोनों ओपनर्स इस समय मैदान पर मौजूद हैं। And there's some field change happening because Steve Smith is asking Pat Cummins to stop for a minute, but then as he comes in right arm over the wicket, short of a length outside the off stump, Rohit Sharma just lets it go to the wicket keeper. Now a lot of things have happened. Cummins, of course, bowling with 140 to 43 kilometer an hour speed. Lot of discussions going on whether this match is going to go to the 6th day. That's a reserve day. If bad weather comes in Weather and spoils a day, then that's the only reason that the test match will be shifted to the 6th day. Otherwise, like Jatin Sood asked me a question, what happens if the match is drawn? Of course, for all the listeners who are aware and who are not aware, both the teams will be declared joint winners. But then those are the possibilities that we'll talk about. Meanwhile, Cummins comes in right arm over the wicket and straying down the leg side, probably hitting the thigh pad of Rohit Sharma. The ball takes a deviation and goes towards the fine leg area. Single picked up then. And looking at the umpire, he gives the leg by. So the first extra runs on the board for the second, in fact, corrected by Jatin Sood. And he said there was a no ball. How can you forget that? Well, thank you so much for correcting us, Jatin. But then the first leg by of the Indian innings, Cummins, of course, bowling a tight line. Rohit Sharma, the way he's moving, his foot movement has been splendid. I know it's too early to talk about that. Let the commentator give some compliments to the Indian captain also. But that single brings Shubman Gill on strike. And that typical Shubman Gill looking at his shoulder and then faces Pat Cummins. Short of length delivery on the off stump on the wicket line. Front foot defense by him. A very confident looking Shubman Gill plays the ball back to the bowler. 23 on the board for India. Sharma on 15. That's the Indian captain Rohit. नजर आई गिल के लिए। अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत गिल और शर्मा के बीच में और एक ट्रैप लगा। Batsman, we saw Manos Labuschagne getting hit on the gloves twice yesterday, but then as an opener, you know how to tackle that. Shubman Gill gets ready to face it. Leg area. He's conceded 14 off 2, 4 overs gone. पर मुनीश उम्मीद नहीं करते हैं, चौंका दिया बैट्समैन को। And that was an accurate bouncer by Mitchell Starc. Getting ready to bowl the second ball now. अगली गेंद मिशेल स्टार्क की और इस बार लगभग नटराज अंदाज में खेला है। ऑन साइड में मोड़ दिया है उस गेंद को। एक पैर हवा में झूलता हुआ, कलाइयां घूमती हुई स्क्वायर लेग अंपायर के पास से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। Well, you spoke about Natraj. The only batsman I can think of is the great Kapil Dev, the way he was hitting the Natraj-shaped shot in England. And he was there in the Legends Gallery yesterday. But what a start by Rohit Sharma. What eyeball coordination he has. And just using the pace of Mitchell Starc's delivery.
right behind the line of the ball. Oh, you want to watch that replay again and again. बहुत अच्छा तालमेल हाथ और पैरों के बीच में 7 में, दृष्टि बहुत पैनी रखते हुए इस बार गेंद की रफ्तार कुछ कम मिडिल स्टंप की तरफ आती हुई। स्टार्क के बारे में कहना होगा कि जानबूझकर उन्होंने अपने आप को लिमिटेड ओवर से अलग रखा है, क्योंकि वो मुख्य बॉलर बनना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैचेस में, और इसीलिए उनके ऊपर ज्यादा दबाव अच्छा प्रदर्शन के लिए भी बन जाता है, और उनके लिए ये लाजमी है कि उनको सफलता मिले जिससे उनका क्रिकेट करियर आगे बढ़ सके। आईपीएल से भी परहेज करते रहे और अपना सारा दारोमदार टेस्ट क्रिकेट में, और स्मरण रहे कि ऑस्ट्रेलिया को इस मैच के बाद एशेस भी इंग्लैंड में खेलनी है। एजबास्टन में टेस्ट मैच होगा और लंबी श्रृंखला होगी। मिचेल स्टार्क धीरे धीरे दौड़ते हुए, और ये गेंद जो कि बहुत ज्यादा कोण नहीं बना रही थी, बाएं हाथ से ओवर द विकेट कर रहे हैं, एक स्वाभाविक एंगल बनता ही है, लेकिन कुछ पलटकर सीधी हो रही थी सीम के सहारे, सुरक्षित खेल दिया उसको। Good to see that left arm in swing coming straight to the right hander. Rohit Sharma aware of the heroics of Mitchell Starc, so he comes forward, watches the ball, and that's a great sight. So the great battle between the new ball and the opening batsman has begun. The Australian bowlers will attack full throttle. Rohit Sharma, of course, what a test career he's had. His average is 45.72 and 50 matches for him and over 3,300 runs in his test match career. Mitchell Starc ready to bowl the next delivery. अगली गेंद मिडल और लेग स्टंप पर थी, इस बार उसको डिफ्लेक्ट कर दिया, पीछे की ओर खेला शर्मा ने, और रोहित शर्मा को 1 रन और मिलेगा 5 बगैर नुकसान के। और स्टार्क अपने रन अप से कोई बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ नहीं रहे हैं, पलटकर देख